In episode 2 of House of the Dragon Season 2, titled Rhaenyra the Cruel, chaos erupts in King's Landing after the brutal murder of Prince Jaehaerys, the son and heir of King Aegon II. Though Queen Rhaenyra is blamed for the act, it was orchestrated by her husband Daemon, who secretly sent 2 assassins, Blood and Cheese, to strike vengeance for the death of Lucerys Velaryon. The horrifying death of the young prince causes grief and fury throughout the city, and Aegon, devastated and enraged, becomes more determined to crush Rhaenyra's claim to the throne. Back at Dragonstone, Rhaenyra is horrified to learn that Daemon was behind the assassination and confronts him angrily, accusing him of weakening her moral authority and making her appear cruel in the eyes of the realm. Their relationship begins to fracture under the weight of mistrust and guilt, with Rhaenyra distancing herself emotionally and politically from Daemon's ruthless decisions. Meanwhile, in King's Landing, Ser Criston Cole is appointed the new hand of the king after King Aegon dismisses his grandfather, Ser Otto Hightower, for failing to prevent the tragedy. Criston, in an attempt to retaliate, dispatches Ser Eric Harjal, a member of the King's Guard, to infiltrate Dragonstone and assassinate Rhaenyra. However, his identical twin brother, Ser Eric Harjal, who serves Rhaenyra and is loyal to her cause, intercept him inside her chambers. The twins engage in a deadly and emotional duel, knowing that only one can walk away. After a fierce battle, Eric kills Eric, and consumed by grief and honor, he takes his own life beside his brother's body, leaving Rhaenyra devastated and shaken by the loss and the tragedy it represents. As the episode ends, both sides of the Civil War are more divided and furious than ever, and the Dance of the Dragons edges closer to full-scale war, with no turning back. In the tapestry of human life, the role of a mother is one of the most powerful and enduring threads. Across cultures, continents, and generations, motherhood is celebrated as a unique bond distinguished by unconditional love, undying care, and unparalleled selflessness. A mother is often the first guide to life's complexities and simplicities. Whether teaching a child how to walk, utter their first words, or solve mathematical equations, a mother is ever present with nurturing patience and a steadfast belief in her child's potential. Her wisdom is a silent force, shaping the moral and emotional landscape within which her children grow. Beyond the physical presence, mother's role involves immense emotional labor. She carries within herself an intuitive understanding of her child's fears, dreams, joys, and sorrows. Even in times of adversity, a mother's embrace is often a sanctuary of comfort and resilience. Her ability to transform moments of despair into opportunities for growth is nothing short of miraculous. Furthermore, the relationship between a mother and her children evolves with time. From the hands-on care of a newborn to the counsel provided to adult offspring, motherhood undergoes a fascinating metamorphosis. With unwavering dedication, a mother adapts to the changing tides of her child's life journey, offering guidance without intrusion and support without stifling independence. In addition to shaping the lives within her care, motherhood also has a reverberating impact on society. Mothers, through the values they instill and the lessons they impart, influence the broader community. They become architects of society, nurturing future citizens who carry forward their legacy of kindness, respect, and integrity. The essence of motherhood has been immortalized in literature, art, and philosophy. Artists paint her with reverent strokes, writers immortalize her in poignant narratives, and philosophers ponder the depths of her influence. The depiction of motherhood transcends mere biological connections. It encapsulates a profound relationship that touches the core of human existence. In conclusion, the role of a mother transcends the physical act of bringing life into the world. She is a guardian and a mentor, a moral compass, and an emotional cornerstone. The essence of motherhood is found in the small, daily acts of love and sacrifice that deeply enrich the lives of those fortunate enough to experience it. Truly, to speak of motherhood is to speak of one of humanity's most profound gifts.
हाँ हाँ मैं गरम, ज़ारा ने देखा पानी में एक लंबा मगरमच्छ, मुंह खोले बैठा था, लगा थोड़ा सा सख्त। आगे तो भालू खेल रहे थे चूल्हे पर, ज़ारा हंसी बोली भालू है मजेदार सफर में। 3 ऊंट चले कतार में धीरे धीरे, ज़ारा बोली इनकी गर्दन कितनी ऊंची। 4 हिरन जंगल जैसे बाड़े में भागे, नरम नरम आंखों से ज़ारा को देखा भागते। E for elephant 5 हाथी 5 हाथी पानी से नहा रहे थे, सूर उठा के ज़ारा को चप चप दिखा रहे थे। F for fox 6 लोमड़ियाँ 6 लोमड़ियाँ छुपन छुपाई खेल रही थी। ज़ारा ने कहा बहुत चालाक दिखती है ये तो। G for giraffe 7 जिराफ 7 जिराफ लंबी गर्दन वाले ऊंचे पत्ते चबा रहे थे नाले के किनारे। हाँ H for हिप्पो 8 दरियाई घोड़े 8 दरियाई घोड़े लेटे थे पानी में भारी। ज़ारा ने देखा और बोली ये तो है बहुत प्यारे भारी भरकम यारी। इगुआना 9 इगुआना चुपचाप बैठी थी चट्टानों पर, उनका हरा रंग मिला मिट्टी के रंगों में। J for जैगुआर 10 जैगुआर पेड़ों के नीचे सो रहे थे। ज़ारा बोली इनके धब्बे कितने सुंदर है रे। K for कंगारू 11 कंगारू उछल रहे थे मस्ती में, एक थैले से झांका बच्चा भी था हंसी में। शेर गश्ते हुए जंगल की कुएं जैसे, ज़ारा थोड़ी डरी लेकिन बोली ये तो राजा जैसे। M for मंकी थे बंदर थे, बंदर गाय चाल उछल कूद कर रहे थे। ज़ारा ने केला दिखाया वो मस्ती में झूम रहे थे। M for नाइटिंगेल तो बुलबुल 14 बुलबुल मीठा गा रही थी सुर में। ज़ारा झूमी बोली संगीत है इनके गुर में। O for ऑल 15 उल्लू पेड़ पर चुपचाप बैठे थे, बड़ी बड़ी आंखों से ज़ारा को देख रहे थे। P for पेंगुइन 16 पेंगुइन बर्फ पर फिसलते खेल रहे थे। ज़ारा ने ठंडी हवा में जैकेट कसली थी। Q for कोयल 17 बटेर झाड़ियों में इधर उधर दौड़ती, छोटी छोटी टांगों से रेत में लुका छिपी करती। R for रैबिट करान खरगोश अधर खरगोश उछलते फांदते घूमते। ज़ारा ने एक को चूमा वो हौले से मुस्कुराते। S for स्नेक 19 सांप रेंगते रेत में धीरे धीरे। ज़ारा दूर से देखती रही ये तो डरावने से है। A for टाइगर ट्विंस बाग 20 बाग आराम से लेटे थे बाड़े में, एक सारा सागर ज़ारा पापा की गोद में। U for उरियल एक उरियल खड़ा था ऊंची चट्टान पर, उसके सींग घुमावदार जैसे बने हो आकार में सुंदर। V for vulture गिद्ध ऊंचे खंबे पर बैठे आसमान की ओर। ज़ारा बोली ये तो बहुत बड़े हैं शिकार की खोज में जोर। W for wolf भेड़िए 3 भेड़िए बर्फीले जंगल में घूम रहे थे। ज़ारा दूर से देख रही थी वो एक दूसरे से झूम रहे थे। 12 शेर कर 12 शेर करसते हुए बर्फीले जंगल में घूम रहे जा रहे थे। ज़ारा ने टोकी बड़ी हवा में उड़ ना जाए बैठे। 4 चमकती एक्सरे मछलियां तैरी थी जल में। ज़ारा ने चौंक कर देखा ये तो दिखती है बाहर से भी जल में। याक 5 याक ऊंचे पहाड़ी मैदान में चरा रहे थे। ज़ारा ने टोपी पकड़ी हवा में उड़ ना जाए बैठते। O for एबरल 15 उल्लू पे 15 उल्लू पेड़ पर चुपचाप बैठे थे, बड़ी पर चुपचाप बैठे बड़ी हवा में उड़ ना जाए बैठते। For पेंगुइन 16 पेंगुइन बर्फ पर फिसलते खेल रहे। ज़ारा बोली ये तो जैसे चलते हो पेंगुइन की कतार में। Q for कोयल 17 बटेर झाड़ियों में बड़ी आंखों से ज़ारा को देख रहे थे। 4 चमकती एक साथ सफेद काली धारियों में। ज़ारा बोली ये तो जैसे चलते हो पेंगुइन की कतार में। In a sun-drenched playground, Lily swings with glee, lost in her own world as sunlight dances through the trees. She pushes herself higher and higher, delighting in the sensation of flight, oblivious to the joyful chaos around her. Lily sits alone, wrestling with homework under the dim light, as tense argument echoes. The shadows deepen as Lily strains to focus, the distant argument intensifying the room's oppressive atmosphere. In the bustling schoolyard, Lily stands isolated, observing the carefree games of other children. A group of older kids approaches, their taunts piercing the air around her. Lily shrinks back, her eyes brimming with tears, as the harsh words strike. In the quiet of her room, Lily sits absorbed, sketching fantastical realms that promise an escape. Lily stands radiant, her smile reflecting a newfound confidence amid the joyful sounds of friends. Bathed in sunlight, Lily is surrounded by friends, their laughter echoing through the park, creating a symphony of joy. राजा विक्रमादित्य श्मशान घाट में प्रवेश करते हैं। उनके हाथ में नंगी तलवार चमक रही है। हवा उल्लुओं की ठंडी आवाज और राख की सरसराहट से कांपती है, क्योंकि बेताल एक पेड़ से भयावह रूप से लटकता है। विक्रमादित्य आ रहे हैं।
चुप्पी केवल बेताल की भयानक चेतावनी से टूटती है। राजन, मुझे ले चलो, पर रास्ते में बोले तो मैं वापस उड़ जाऊंगा और हर बार मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जिसका सही उत्तर देना होगा। राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठे हैं। दरबार की चुप्पी का भार उन पर पड़ रहा है। राजा के सामने 3 गुरु चोरी हुए खजाने के पीछे की सच्चाई का अनावरण करने के लिए तैयार खड़े हैं। राजा चुप्पी तोड़ता है। मेरे खजाने को लूट लिया गया है। चोर कौन है? विद्वान घोषित करता है। मुझे अपनी पुस्तकों से परामर्श करने दो। योगी कहते हैं, मैं भविष्य में झांकूंगा। तांत्रिक प्रतिज्ञाएं, मैं अदृश्य हो जाऊंगा और खोजूंगा। अगले दिन साधु के वचनों पर अमल करते हुए सैनिक एक निर्दोष व्यक्ति रत्नाकर को पकड़ लेते हैं। जब वे रत्नाकर को घसीट कर ले जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश उनके कवच पर चमकता है। उसके चेहरे पर भ्रम और डर अंकित है। योगी की भविष्यवाणी झूठी साबित होती है और तांत्रिक भी चोर को ढूंढने में विफल रहता है। महाराज, असली चोर तो तांत्रिक है। वह अदृश्य हो गया, खजाना चुरा लिया और किसी और पर आरोप लगा दिया। राजा जांच करता है और तांत्रिक चोर के रूप में प्रकट होता है। One day, a crafty crow stole a piece of bread from someone. Feeling triumphant, it perched on a branch of a tall tree, ready to savor its prize. As fate would have it, a cunning fox happened to pass by and noticed the crow with the bread in its beak. The fox's mouth watered at the thought of having that delicious bread for itself. The fox devised a clever plan to acquire the bread without causing a ruckus. Approaching the crow, it exclaimed, "Oh, what a melodious voice you possess! Could you bless my ears with a song?" The crow, flattered by the compliment and feeling exceedingly proud of its supposed musical talent, opened its beak wide and let out a loud caw-caw. In doing so, the bread slipped from its beak and fell to the ground. Without missing a beat, the fox grabbed the bread hastily and turned to the crow with a sly grin. The moral of the story is simple yet profound. Do not let flattery distract you from your senses. Wise folks always think twice before they act, ensuring they do not fall prey to the deceptive charm of others. The warm morning sun filtered through the tall castle windows, casting long shadows across the ornate chamber. Prince Demon Targaryen, his silver hair cascading down his shoulders, stood alone by the hearth. He was preparing for a journey that could shift the balance in the kingdom. King Viserys, his older brother, had summoned him to King's Landing against the backdrop of growing tensions within the realm. Viserys, a peace-loving monarch, fretted over the looming threat of the rebel forces amassing on the horizon. He sought Daemon's strategic mind and battle prowess to eliminate the threat before it escalated. As Daemon rode through the bustling streets towards the castle, he pondered the callousness of war and the weight of his family's legacy. Upon reaching the imposing gates, he was greeted by his brother's warm embrace and guided to the council chamber where the realm's best tacticians awaited. Inside, the room buzzed with anxious energy. Lord Corlys Valerion, known as the Sea Snake for his mastery of naval warfare, laid out maps filled with potential enemy encampments. His sharp eyes glinted with determination as he spoke of the rebellious uprising led by a former ally turned usurper. The meeting was intense, yet Daemon's mind drifted to his niece, Princess Rhaenyra Targaryen. Her potential was undeniable, yet she was often overshadowed by the politics swirling around her. As heir to the throne, her position was crucial. He vowed silently to empower her amidst the chaos. The council decided on a daring strategy, a simultaneous assault on land and sea. As tension mounted, Daemon prepared to lead the ground forces, while Lord Corlys commanded the fleet. The two men shared a moment of mutual respect before embarking on their respective missions. The battle was fierce, the air filled with the clang of swords and cries of warriors. Daemon's dragon, Caraxes, soared overhead, unleashing torrents of fire upon enemy lines. His presence inspired the troops, yet amidst the chaos, a sudden betrayal unfolded. A trusted lieutenant, seduced by promises of power from the rebels, turned against Daemon, leading his men to attack their own. Daemon, fueled by fury, engaged in a duel with the traitor, eventually overcoming him with sheer skill and determination. While the battle raged,
Princess Rhaenyra had arrived quietly with her dragon, Syrax, to assist. Her unexpected bravery turned the tide, leading to a decisive victory for Daemon and his forces. Despite the victory, the council realized the rebellion was far from over. The unrest in the kingdom continued, casting a long shadow over King Viserys' reign. Daemon, though triumphant, knew the road ahead was fraught with challenges. As he returned to King's Landing, he resolved to protect his family and ensure Rhaenyra's place as the future queen. The House of Dragon's legacy was only beginning. चीकू एक शरारती बंदर घने जंगल में झूलता है, अपनी हरकतों से शांति भंग करता है। मैं पेड़ों से पके फल छीन लेता हूं और अपने पीछे तबाही मचाता हूं। जंगल शिकायतों से गूंज रहा है क्योंकि हर प्राणी मेरी चंचल उत्पीड़न से थक गया है। चीकू देखता है कि एक बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे फल से भरी टोकरी को जंगल के रास्ते ले जा रहा है। वह चुपके से आता है और कछुए की टोकरी से एक फल छीन लेता है। कछुए की आंखें संकरी हो जाती हैं और वह कांपते हुए चेतावनी देती है, तुम एक दिन किसी ऐसी चीज के लिए तरसोगे जो तुम्हारे पास नहीं हो सकती। जंगल में बहुत अंदर चीकू को एक जादुई फल मिलता है, एक खोज जो सब कुछ बदलने का वादा करती है। एक बार काटने से उसके भीतर शक्ति का सैलाब उमड़ पड़ता है जो उसे अपार शक्ति के प्राणी में बदल देता है। उसकी दहाड़ जंगल में गूंजती है। यह जीत की आवाज है जो जल्द ही निराशा में बदल जाती है क्योंकि वह सबसे मजबूत फिर भी सबसे अकेला प्राणी बन जाता है। उसके आने पर अन्य जानवर भाग जाते हैं और सौहार्द की जगह डर ले लेता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। चीकू कछुए के पास जाता है। उसका चेहरा पछतावे से भरा हुआ है। मुझे अपने कर्मों पर खेद है, मैं आपकी क्षमा चाहता हूं। चीकू विनती करता है। उसका स्वर पछतावे से भरा हुआ है। चीकू कछुए से विनती करता है, कृपया मुझे बताएं कि इस श्राप को कैसे तोड़ा जाए। मुझे आपकी मदद चाहिए। कछुआ जवाब देता है, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरे दिल को छू लिया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कछुआ बोलना शुरू करता है, अभिशाप को तोड़ने के लिए तुम्हें। चीकू प्राचीन पद्धति का पालन करता है। अभिशाप टूट जाता है और वह वापस एक सामान्य बंदर में बदल जाता है। अब केवल एक बंदर नहीं, चीकू एक बेहतर प्राणी है जो दोस्ती को अपनाने और जंगल के जीवों की मदद करने के लिए तैयार है। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान सम्राट की कहानी। बहुत समय पहले भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। विदेशी आक्रमणकारी आ रहे थे और देश की एकता संकट में थी। उसी समय एक साधारण परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम था चंद्रगुप्त। उसका पालन पोषण जंगलों के पास एक छोटे से गांव में हुआ। बचपन से ही वह तेज, साहसी और आत्मविश्वासी था। उसका जीवन तब बदल गया जब उसकी मुलाकात एक महान ब्राह्मण विद्वान चाणक्य से हुई। चाणक्य मगध के नंद राजा से अपमानित होकर प्रतिशोध की भावना से भर चुके थे। उन्होंने चंद्रगुप्त में एक असाधारण नेता की छवि देखी और उसे शिष्य बना लिया। चाणक्य ने उसे युद्ध, राजनीति और कूटनीति की गहन शिक्षा दी। जब चंद्रगुप्त युवा हुआ तब वह चाणक्य के साथ मिलकर मगध के अत्याचारी राजा धनानंद को हटाने की योजना बनाने लगा। धनानंद के शासन से जनता परेशान थी। चंद्रगुप्त ने एक सेना तैयार की और वर्षों की तैयारी के बाद कड़ी लड़ाइयों में जीत हासिल करते हुए उसने नंद वंश को समाप्त कर दिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट बन गया था, एक ऐसा सम्राट जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। सिंहासन पर बैठने के बाद चंद्रगुप्त ने पूरे उत्तर भारत को संगठित किया और शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया। इसी समय सिकंदर महान की मृत्यु के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस भारत के पश्चिमी क्षेत्रों पर अधिकार जमाना चाहते थे। चंद्रगुप्त ने न केवल उन क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लिया बल्कि एक शांतिपूर्ण संधि भी की जिसके अंतर्गत उसे पश्चिमी भूभाग और सेल्यूकस की बेटी का विवाह प्राप्त हुआ। चंद्रगुप्त केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक आदर्श शासक भी था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र उस युग का सबसे उन्नत और समृद्ध नगर बन गया। उन्होंने सड़कों का निर्माण करवाया, सिंचाई की व्यवस्थाएं की और व्यापार को बढ़ावा दिया। उनके दरबार में ग्रीक राजदूत मेगस्थनीज भी आया जिसने उनके शासन की प्रशंसा की। अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया।
उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंपी और स्वयं संयमित जीवन की ओर चल पड़े। वे दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः वहीं उनका निधन हुआ। The Thompson family, Dad, John, Mom, Lisa, and their 2 kids, Jake, 10, and Mia, 8, have just moved to a new city. John lost his job, and Lisa's small bakery isn't making enough money yet. The kids miss their old friends, and the family is struggling to adjust. One night, during a thunderstorm, the power goes out. The family huddles together with a flashlight, telling funny stories to lighten the mood. Mia suggests, what if we all help each other? Like a superhero team. The next morning, the Thompsons hold a family meeting. Jake offers to help Mom with baking after school. Mia suggests making colorful posters to advertise the bakery. Dad decides to take online courses to learn new skills while applying for jobs. Mom promises to teach the kids how to bake simple treats. They call their plan Operation Stronger Together. Jake's idea of Kids' Cupcake Decorating Day brings new customers to the bakery. Mia's posters attract neighbors, and soon, the bakery gets its first big order, a birthday cake. Dad gets a part-time job at a local store while studying. Mom's baking classes become so popular that she starts a weekend workshop. Just as things are looking up, disaster strikes, a pipe bursts in the bakery, ruining supplies. The Thompsons feel defeated, but Jake remembers their motto, Stronger Together. They host a family bake sale in their driveway to raise repair money. Neighbors and new friends chip in to help. A local business owner, impressed by their teamwork, offers Dad a better job. Months later, the Thompson family bakery is thriving. Mom's bakery now has a loyal customer base. Dad loves his new job and still helps at the bakery on weekends. Jake and Mia have new friends and even started a young bakers club at school. As they sit together eating Mia's first solo-baked cookies, a little burnt but delicious, Dad smiles. We didn't just survive, we became stronger, because we did it together. Torrential rain lashes against the old bungalow as lightning flashes light and thunder rattles the windows. Arnav sits by the window, a lantern casting a dim glow, his face etched with trouble. He tries to focus on his mystery novel, but his mind drifts with the storm. अर्नव एक टाइपराइटर पर टाइपिंग कर रहा है। कमरे में एक लालटेन की रोशनी से पीला प्रकाश फैल रहा है। अचानक फोन की घंटी बजती है, जिससे अर्नव डर जाता है। एक डरावनी आवाज गूंजती है, तुम्हें पता है कि तुमने जो लिखा है वो असल में हो चुका है। आधी रात को बंगले के दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई देती है, जिससे अर्नव डर जाता है। एक रहस्यमय लड़की, भीगी और फटी हुई, उसके दरवाजे पर गिर जाती है। अर्नव उसे अंदर ले जाता है और उसे कंबल से ढोंक देता है। एक शांत और सुरक्षात्मक इशारा। उसकी पकड़ में एक डायरी, अर्नव के नाम से अंकित, एक अनकहे रहस्य का वादा करती है। अर्नव डायरी खोलता है, अज्ञात की ओर एक यात्रा शुरू करता है। आधी रात के बाद अर्नव एक डरावनी खोज के साथ डायरी पढ़ रहा है। डायरी के अंतिम पृष्ठ पर एक भयानक भविष्यवाणी है। रात 3 बजे लेखक खुद ही मारा जाएगा। अर्नव डर के मारे दरवाजा बंद करने के लिए भागता है, भविष्यवाणी से बचने के लिए बेताब है। अर्नव दरवाजे के पास खड़ा है, रिवॉल्वर को कसकर पकड़े हुए है। उसका दिल पिंजरे में फंसे एक पक्षी की तरह धड़क रहा है। 3:00 AM. A shadow enters the living room, cloaked in mystery. Arnav's voice pierces the silence. कौन हो तुम? The shadow whispers back. मैं वही हूं जिसे तुमने अपने शब्दों से जिंदा किया। Gunshots echo, shattering the calm. As the lights flicker on, a girl lies dead on the floor, wearing Arnav's mask.